Hello everyone, welcome back to your favorite channel for UPSC and UGC नेट प्रिपरेशन। आज हम एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक ना सिर्फ हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है बिकॉज द प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। What is the preamble? The preamble is basically the introductory statement of the Constitution. It tells us what India stands for, what our Constitution wants to achieve, और किस विजन के साथ हमने अपना Constitution बनाया. As N.A. Palkhiwala said, it is the soul of the Constitution and a key to understanding its intent. Beautiful, right? This is the exact text of the preamble. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Let's understand each word in simple language. Sovereign means हम किसी foreign power के under नहीं है. We make our own laws. Socialist, स्टेट का काम है इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना एंड वेल्थ शुड नॉट बी इन अ फ्यू हैंड्स. सेक्युलर, all religions are equal in the eyes of the state and no official religion. Democratic, government by the people, for the people and of the people through elections. Republic, head of the state, president, which is elected and not based on heredity like in monarchy. Now, the preamble promises us four main values: justice, liberty, equality and fraternity. Fraternity assures dignity of the individual and unity and integrity of the nation, and it is not just legal, it is emotional. ये प्रीएम्बल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है जो 13 दिसंबर 1946 को मूव हुआ था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया एंड 26 नवंबर 1949 को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में बन गया. एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केशवानंद भारती केस 1973, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया जा सकता. नाउ लेट अस समराइज. It reflects the core values of the Constitution. It guides interpretation of laws और ये बताता है कि हम किस विजन के साथ अपना भारत बनाना चाहते हैं. It embodies the spirit of the Constitution, the why of the Constitution. Which of the following words were inserted into the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act? The correct answer is socialist, secular, integrity. Frequently asked question: is the preamble legally enforceable? No, it is just not justiciable but used for interpreting laws. What is the meaning of republic? An elected head of state, not a hereditary ruler. Why is secular important? Because it ensures religious freedom and equality and preventing communal discrimination. So friends, the preamble is like the vision board of our constitution. It doesn't just tell us what the constitution says but why it says so. अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।